Hello, dear students. Good afternoon to all of you. Today, we are going to start unit number 2 from paper number 11, plant physiology, and the name of unit, a smaller unit is there, mineral nutrition in plants. So, I hope you all have prepared for first unit effortlessly. Now try to understand the things. This unit actually it is, as far as concerned mineral nutrition, many students think that this is boring unit, boring. So many students treat it as boring unit. This is not a boring unit, this is very interesting unit, and actually this unit is having a practical application, practical significance in your farmland, in your farm field. So you, as you people are knowing all those relevant things with agriculture, so this unit is actually important as far as agriculture area is concerned. So be prepared for this, be psychologically ready for this. Don't treat it as boring unit, as this is a smaller unit. This will bring you your marks up so much at high level. So try to do topic effortlessly. So let us begin with the second unit, that is mineral nutrition. This mineral word you might have heard in your day to day life. So minerals are required for all organisms for as a nutrient, minerals as a nutrient. So if there is a deficiency of vitamin B in our body, so you got burns at your tongues, in mouths. So these are mineral elements, vitamins, minerals. So those are required for normal body functioning. In plants also, there are various elements, mineral elements especially, required for normal physiology, normal life functioning. So what is mineral nutrition? Whatever things, let us try to understand. In introductory part, we are going to discuss here these essential elements. So essential word is coming, essential, that is required, जरूरत है उसकी प्लांट को, सो उसको essential कहते हैं. So essential elements are of two types. First one is non-mineral elements and second one is mineral elements. So non-mineral, so you just google out what is mineral. This is basic. You must know first what is mineral, where minerals are found. ये तो बच्चों वाली बात है, मिनरल क्या है, मिनरल कहाँ पे मिलते हैं, ये तो 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे बताते हैं मिनरल क्या है, मिनरल कहाँ पे मिलता है, आपको भी पता है. तो मिनरल सॉइल में मिलते हैं, हम लोगों को पता है. सो essential elements are of two types. First one, that is non-mineral elements, and another one, that is mineral elements. So non-mineral elements which are not found in minerals, and another is mineral elements. So first one we are going to discuss, that is non-mineral elements. These are essential, non-mineral essential elements. So which elements are coming in under this? That is principal elements which you people counteract with this carbon, hydrogen, oxygen. In organic chemistry, these
organic chemistry whenever you are going to study that. So these three elements, organic chemistry is mostly depending on this relevance of these elements: CHO, carbon, hydrogen, oxygen. These three are non-mineral elements. So from where we are getting carbon, hydrogen, oxygen? So from water, from carbon dioxide, we are getting carbon, that is we are getting from CO2, hydrogen from water, oxygen also from water, and this. So try to understand what is going on here. Carbon, hydrogen and oxygen, these are non-mineral essential elements. These are required for the body. We can't imagine our existence without these elements. They are derived primarily from CO2 and H2O. अभी यही बता रहा था मैं कि कहाँ से डिराइव किए गए हैं ये एलिमेंट्स. सो दीज आर डिराइव्ड प्राइमरीली फ्रॉम CO2 एंड H2O. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं? MCQ में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को. तो ये बात पता होनी चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर is the source of these elements. Next thing coming is mineral essential elements. These are non-mineral. Now we are going to study mineral essential elements. What are mineral essential elements? These are required for growth and development of plants. तो plant के growth and development के लिए ये mineral elements लगते हैं. ये मिनरल एलिमेंट्स देख रहे हैं हम लोग, नॉन मिनरल नहीं. सो व्हाट इज द सोर्स फॉर मिनरल एलिमेंट्स? दैट इज soil. Ultimate source for mineral elements is soil, because soil is produced from withering of the rock, and whenever you do analysis of rock, then you will come to know that rock is made up of different minerals. So in soil we are getting n amount of minerals. So source of mineral elements ultimately is the soil. Please remember this, highlight this source. MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको पूछ सकते हैं. Here is some list and extended part, that is MO, molybdenum, nickel, copper, iron, zinc, manganese, boron, chlorine or chloride, sulfur, phosphorus, magnesium, calcium, potassium, nitrogen and others. You can add the sodium in this. So these are acquired primarily in the form of inorganic ions from soil. So these all elements are taken up by the plants in the form of inorganic ions from the soil. तो आप लोगों को आगे वाली जो एग्ज़ाम होती है, आपका MSc का एंट्रेंस होगा, आपका आगे का जो भी लाइफ साइंस का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये इम्पोर्टेंट, जो प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल मिनरल्स, रूट्स अब्सॉर्ब कर लेंगे मिनरल्स को, तो ये इनऑर्गेनिक आयंस के फॉर्म में होते हैं. ये बात ध्यान में रखना. चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. Essential mineral elements are further classified into primary and into two categories according to their relative concentration in plant tissue. तो उनका concentration, एक एलिमेंट ले लो आप लोग, कौन सा भी एलिमेंट, उसका एनालिसिस करना चाहते हो, तो वो एसेंशियल है, कौन से कैटेगरी में उसको बिठाना है. तो इसके लिए दो कैटेगरीज होती है एक्चुअली, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अगर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लगता है प्लांट को,
तो उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर वो कम कॉन्सेंट्रेशन में लगता है तो उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या फिर उसे ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रेस कम अमाउंट में लगता है। So what is the criteria for essentiality of elements? And that is proposed by these two scientists in MCQ type of question. They can ask Arnon and Stout. They given the criteria for essentiality of elements. So when आप कब कह सकते हो कि ये एक एलिमेंट है सर, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, कोई भी एलिमेंट ले लो आप लोग। अगर एक एलिमेंट का स्टडी करना चाहते हो प्लांट के बॉडी के न्यूट्रिशन में, तो आप कब कह सकते हो कि ये एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है? तो इसके लिए आर्नन एंड स्टाउट, इन दोनों साइंटिस्टों ने इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। सो व्हाट आर द पॉइंट्स कमिंग अंडर दिस क्राइटेरिया ऑफ essentiality of mineral elements? First one is the elements must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction. प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करने के लिए ये एलिमेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए, लगने चाहिए, नेसेसरी होने चाहिए। सो द एलिमेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की बात है, नॉर्मल ग्रोथ रिप्रोडक्शन करने के लिए ये नेसेसरी होने चाहिए। द एलिमेंट्स मस्ट बी हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। इस एलिमेंट का स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए बॉडी में कुछ, तो प्लांट की बॉडी में, एंड शुड नॉट बी रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। इस एलिमेंट के लिए कोई भी रिप्लेसेबल आइटम नहीं चाहिए, रिप्लेसेबल आयन, रिप्लेसेबल एलिमेंट नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा कि सोडियम के जगह आप पोटेशियम डालो फर्टिलाइजर में तो चल जाएगा। अगर ऐसा चल रहा है तो सोडियम इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट। अगर सोडियम का रिप्लेसमेंट किसी से भी नहीं होता है, दैट इज शोइंग दैट इज sodium is essential. So ultimately result is the essentiality. So these elements must be having specific function. उस एलिमेंट का कुछ तो स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए प्लांट की बॉडी में, एंड शुड नॉट बी रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। सिंपल बात है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज द element must be directly involved in the nutrition of the plant. So there is direct involvement of that element in nutrition of the plant, no indirect involvement. Directly it is involved in the nutrition of the plant. So that is also a criteria for essentiality. Actually these are three main points coming under criteria for essentiality of elements proposed by this Arnon and Stout. If an element satisfies all above these criteria, three criteria, it is considered to be as essential element. Otherwise it will not be considered as essential element. So today we will stop here and try to focus, try to understand, try to study these topics with real life relevance, please. So I am stopping here. Thank you one and all. Stay home, stay safe.